आजकल पेरेंट्स आर वेरी बिजी अपनी जॉब में, अपने बिजनेस में, एंड किड्स ऑल डे दे आर ऑन द फोन, दे आर ऑन द डिजिटल मीडिया। तो व्हाट डू यू थिंक कि जो डिजिटल एरा है इसकी वजह से पेरेंट्स और किड्स के बीच में जो ये डिस्टेंस क्रिएट हुआ है, उस व्हाट इज द रीजन बिहाइंड एंड हम उसका सॉल्यूशन क्या है? The biggest problem our society created for women today, पढ़ ले लिख ले, ये तो सारी उम्र किचन में निकल जाएगी, खाना बनाना पड़ेगा। हर पेरेंट को लगता है जो टीन्स है दे डोंट लिसन टू देम। सो ट्रू ये है कि दे डोंट लिसन, और सच ये है कि पेरेंट्स दे डोंट अंडरस्टैंड और दे डोंट वांट टू अंडरस्टैंड देयर चाइल्ड। वो जनरेशन गैप इज देयर। जब बच्चा अपनी किसी प्रॉब्लम के साथ आता है तो हम उसको बोलते हैं हमारे पे भी ये टाइम आया था, तेनू नवी जवानी चढ़ी है, तुझे नया चल रहा है, हमको भी पता ही है कैसे करते हैं। नहीं, आपको नहीं पता है। You were born in a different era. The child is born in a different era. You have no idea what their troubles are. When we were teenagers, we were talking to our parents. There were certain things they never understood. Whatever you're talking, whatever you're saying to this, raw mind, this blank slate, that becomes their reality. सब कहते हैं कि शादी के बाद औरत के सपने खत्म हो जाते हैं, लेकिन इन्होंने प्रूव करके दिखाया कि जिंदगी की असली गेम तो सेकंड इनिंग्स में शुरू होती है। 21 की एज में शादी, 37 की एज में रीस्टार्ट, और आज इंडिया के टॉप 100 स्पीकर्स में नाम। लुधियाना से लेकर जोश टॉक के मंच तक, शी इज अ स्टोरी ऑफ फायर, करेज एंड फेथ। Let's welcome the unapologetic, unstoppable Aman Bhatia. Hi Aman. Hi, how are you? I'm good. Welcome to our show. Thank Not you just a woman. Thanks. अमन, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है कि आजकल पेरेंट्स आर वेरी बिजी अपनी जॉब में, अपने बिजनेस में, एंड किड्स ऑल डे दे आर ऑन द फोन, दे आर ऑन द डिजिटल मीडिया। तो व्हाट डू यू थिंक कि जो डिजिटल एरा है इसकी वजह से पेरेंट्स और किड्स के बीच में जो ये डिस्टेंस क्रिएट हुआ है, उस व्हाट इज द रीजन बिहाइंड एंड हम उसका सॉल्यूशन क्या है? हाउ वी कैन डू दैट? Okay, so this is not the first time I've been given this question. Parents are always coming up with complaints about why is my child not listening? Why is my child always glued to these digital media? They're glued to their phones, they're glued to their, iPads, their laptops, everything. The problem is that they're seeing all this. बच्चा वही करता है जो बच्चा देख रहा है. Okay. When the parents are coming back home, when they want a leisure time for themselves, what are they doing? They are with their phones. The fathers don't go to the toilets even without their phones. So every time, whenever they are free, so सबके लिए एक पैरामीटर बन गया कि अभी हमको हमारे पास 15-20 मिनट फ्री हैं, phone. So that's exactly what the child is seeing. He's only mimicking their parents. True. The child is only and only mimicking parents. This is exactly what he sees in school also. There are a lot of schools wherein you have to, deposit your phones on the front desk. But there are a lot of schools where the phones and laptops are given to the teachers to work in the class, because the schools have also become very digital. Every class has, the smart boards and everything is done on online. जिससे बच्चा सीख भी रहा है. One thing we have to make one very clear thing. We live in an era of digital rush, and we all, our age people, 35, 40 plus people, we are immigrants in the world of technology. The children today are residents in the world of technology. हमारे को रेजिडेंटशिप नहीं है, वो बेचारे PR लेके बैठे हैं और हमारे पास अभी हम इमिग्रेंट्स हैं बिल्कुल. हम सीखते हैं टेक्नोलॉजी. द किड्स आर born with this technology. I have 3 kids. The first one, तब बटन वाले फ़ोन होते थे. The last one, he knows how to operate all these gadgets because this is something they are born into. You cannot take out this technology from their life. It's their life. That's how they are going to grow up. Every new thing has a bane or a boon. Yeah. This is exactly the same thing. We just need to channelize what our structure of our house is, how we're going to deal with it. So there should be balance. Of course. And it's very important to create that balance. आप 3 टाइम का खाना एक टाइम पे नहीं खाते हो. There has to be a balance in everything.
तो मतलब कोई डिजिटल बाउंड्री होनी चाहिए, देयर शुड बी। yes, but that has to start with the parents first. Not the child. Not- आप बच्चे को बोल रहे हो कि फोन बंद करो और खुद आप दूसरे कमरे में फोन लेके बैठ गए हो, the child will not listen. कि कितना hypocrite है मेरा parent. Seriously, They're telling me not to use it. They're using it. मैं काम कर रहा हूँ. Keep that phone down when your child is around. We don't do that. Okay, that's true. And one more thing कि आजकल के जो teens है, is some misconception or what, they are very lazy or they are rebellious. What is the reason behind why they are so rebellious and why They're not so lazy? lazy. They're not rebellious. They're just being their age. Okay, We've actually forgotten our time. that kind of. We were lazy at times. Girls, you're just going to, we are lunar beings. Women are lunar beings. We don't work according to सुबह उठे काम कर. मैंने आज तक ऐसी लेडी नहीं देखी है जो सुबह उठती है, जर्नलिंग करती है, जिम जाती है, वापस आती है, अच्छा हेल्दी खाना बनाती है और फिर अपने काम पे जाती है. नहीं, ऐसे नहीं होता. आई हैव नेवर मेट इवन अ सिंगल जिसको बर्न आउट नहीं है. नहीं. Everybody gets burned out. Men, on the other hand, this is what a man does. We have our days. There are days when we feel very lethargic. We just want our bed and a cup of coffee or something meetha to eat in our bed. There are days when we also get lazy. That's exactly what goes with boys and girls. Their structure, their growing up also has a very big difference in their growing up. तो उनके हार्मोनल सर्जेस बहुत डिफरेंट रहते हैं. जो लड़की है वो कुछ दिनों में बहुत लेजी हो, कुछ दिनों में शील बी लाइक झांसी की रानी, वो निकल जाएगी बाहर, वो काम करेगी. कुछ दिनों में शी विल बी अ लिटिल सॉफ्टर. लड़कों को भी जब ऐसे हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं तो एग्जैक्टली सेम थिंग. कई बार उनको समझ नहीं आता है मेरी बॉडी के साथ क्या हो रहा है. एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी से तू उठता नहीं है, तू सारा दिन यहाँ बैठा है, तू टीवी देखी जा रहा है. नहीं, that's how they grow. We also did the same thing. But as parents we forget ये time हम पे भी आया था. But ये ना opposite भी चलता है. जब बच्चा अपनी किसी प्रॉब्लम के साथ आता है तो हम उसको बोलते हैं हमारे पे भी ये टाइम आया था, तेनू नवी जवानी चढ़ी है, तुझे नया चल रहा है, हमको भी पता ही है कैसे करते हैं. नहीं, आपको नहीं पता है. You were born in a different era. The child is born in a different era. You have no idea what their troubles are. When we were teenagers, we were talking to our parents. There were certain things they never understood. That's the same case. Our children tell us something like, ये कोई बात है गुस्सा करने वाली? पर उनके लिए वो बहुत बड़ी बात है. Right now, a 15-year-old or a 16-year-old, उसके लिए वो बहुत बड़ी बात है. 40-year-old woman के लिए नहीं होगी. So their perception about life is their age. Our perception of life is about our age. The child is not lazy. The child has less, उसके पास एक अच्छा motivation नहीं है to go out and move. क्योंकि गेमिंग एरिया ऑफ द किड्स बहुत कम हो गया है. फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम है. हर पेरेंट को लगता है जो टीन्स है दे डोंट लिसन टू देम. सो ट्रू ये है कि दे डोंट लिसन और सच ये है कि पेरेंट्स दे डोंट अंडरस्टैंड और दे डोंट वांट टू अंडरस्टैंड देयर चाइल्ड. वो जनरेशन गैप इज देयर. ऑफ कोर्स देयर इज समथिंग कॉल्ड अ जनरेशन गैप. पेरेंट्स ये नहीं कहते कि बच्चे हमारी सुनते नहीं हैं. टीनेज स्पेसिफिकली इज एन एज जब आपने बच्चे को सुनाना नहीं है, उसकी सुननी है. Okay. 5 years to 10 years, 11 years, 12 years तक की एज होती है जब आप बच्चे को सिखाते हो. When you teach them, you give them character, you give them good habits, you give them, okay, get up in the morning, brush your teeth, namaste करो, पैरों को हाथ लगाओ, put your plate in the sink. You teach them. By the time the child is into pre-teens and a teenager, no, that is not the time you're going to teach the kid. वो सीख चुका है. अब उसको सुनो. Before lecturing, start understanding what your child needs to say. Be a good listener for your child. कई बार उसको solution नहीं चाहिए होता है. Sometimes he just need a vent out. Or it's a question that every parent comes with and I tell them, please do not lecture your teenager. Listen to them. We've stopped. हमें लगता है यार हम बड़े हैं उम्र में, हमें पता है कैसे काम करना है. लेकिन हम भूल जाते हैं कि उसको इस वक्त validation चाहिए. बच्चे को हमें भी तो चाहिए होती है. When we get up, we dress up nicely. 2 लोग बोलते अरे वाह क्या लग रही है. And we like मेरा दिन बन गया. My dress is done. I am good. I am good to go. That's exactly what the child needs. Validation. किसी एक पॉइंट के लिए that's not good also, but still the child needs it because वो उसका एज है. ये बहुत डिफिकल्ट होता है पेरेंट्स के लिए. दिस टाइम पीरियड ऑफ 13 to 17, 18 ये निकल जाए, बच्चे बहुत सियाने हो जाते हैं. यू नीड टू बी वेरी वेरी पेशेंट विद द चाइल्ड.
वन मोर थिंग, जैसे मेरे ही नोन में है कुछ, दे आर अराउंड 9-10 गर्ल्स. उनमें प्रॉब्लम क्या है, अगर मदर कह रही है कि लेफ्ट तो डॉटर शी सेइंग राइट. अगर उसने बोला ये करो, शी विल डू टोटली ऑपोजिट. उसका रीजन क्या हो सकता है, उसका इस टाइम मेंटल स्टेट क्या होगा, व्हाई शी इज डूइंग दैट वे. बहुत सारे बच्चे करते होंगे, इवन बिफोर टीन्स आल्सो इन 9 or 10. What can be the reason behind that? Not giving them enough choices. Okay. There are 4 types of parenting. First, authoritarian, then authoritative, then permissive, and then gullible. You're not into what they're doing, what not doing. The first होता है ना, उसमें होता है मैं जो कह रहा हूँ वो करो. जो बच्चा ऐसी पेरेंटिंग के साथ बड़ा होता है ना, मैं जो क्या है वो बहुत है, जो आज से 40-50 ईयर्स पहले चलता है. मेरे पापा ने बोला है करना ही करना है, जो मैंने बोला है वैसे करो. सेकंड होता है अच्छा मैं ये बोल रहा हूँ तू क्या कहता है, दिस इज माई पॉइंट ऑफ व्यू, व्हाट आर यू सेइंग. दैट्स कॉल्ड अथॉरिटेरियन, अथॉरिटेटिव, कि हाँ मैं अथॉरिटी के साथ पूछ रहा हूँ आप क्या कहते हो. थर्ड होता है परमिसिव, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो एक गुडी चॉकलेट पेरेंट है, जो मेरा बच्चा बोलेगा जैसे बोलेगा मैं वही करूँगा. एनीथिंग यू वांट आई विल गिव यू, आई विल ब्राइब यू, आई विल गिव यू. वो बच्चे कभी भी सेटल नहीं हो पाते, बिकॉज उनको हमेशा कोई ना कोई होता है बढ़ाने के लिए, बढ़ावा देने के लिए. और एक होते हैं बिल्कुल अनइंटरेस्टेड पेरेंट, बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, उनकी अपनी लाइफ चल रही है, बच्चे की अपनी लाइफ चल रही है. या तो वो क्लब्स ज्वाइन करता है, या तो वो फ्रेंड्स के साथ बाहर घूमता है, क्योंकि उसको पता है मेरे पेरेंट्स ने मेरी नहीं सुननी. ऐसे बड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के जब क्लाइंट्स आते हैं, येस दे आर लाइक दिस ओनली. माई फादर डजंट इवन नोज मैं कौन सी क्लास में हूँ, मेरा सेक्शन क्या है, दे हैव नो आइडिया. जो सेकंड केस बोला था वो सबसे अच्छा रहता है. यू वॉन्ट योर चाइल्ड टू वेयर क्लोथ्स ऑफ योर चॉइस, 3 कपड़ा निकाल के रखो बाहर, ये 3 रखे, इसमें से देख ले क्या पहनना है. आपने अपनी मर्जी भी कर दी, बच्चे ने अपनी मर्जी भी कर ली. बेटर वे. आपने बोला आई डू नॉट नो व्हाट टू डू फॉर माई बर्थडे, गिव देम अ चॉइस. you know what is right, but at least give them some sort of some choice, some authoritativeness. घर में कुछ हो रहा है पूछो उससे, तुमने मानना है नहीं मानना है, पर पूछो तो सही. उसको लगेगा यार मैं घर में important हूँ, मेरा कुछ से है. in my house there are times I tell my daughters, now you tell me आज क्या बनाऊँ, क्योंकि every time I used to cook they were like ये नहीं खाना ये नहीं खाना. Now I tell them okay now you tell me what to cook, because अब ये सोच के बोलना मुझे मेन्यू बताना, क्योंकि दादी ने भी खाना है, दादू ने भी खाना है, और पापा ने भी खाना है, और मैंने भी खाना है, और तुम दोनों ने भी खाना है, तो तुम देखो व्हाट यू वांट टू. तो अब उनको लगता है आई डिड दैट फॉर 2 years बिफोर कोविड. अब मेरे घर में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, जो बनाया चुप करके सब खा लेते हैं, बिकॉज एटलीस्ट आई स्टार्टेड गिविंग देम अ चॉइस. देयर आर डेज आई टेल देम यू प्रिपेयर द मील, तुम खाना बनाओ, सैंडविचेस बना दे आज, मैगी बना लो, बट तुम बनाओगे. Then they get to know कि हाँ this is the most difficult choice in the house is सुबह क्या बनाना है, दोपहर को क्या बनाना है, रात को क्या बनाना है. And nobody teaches us, no school teaches us, there is no curriculum for it. And the biggest problem our society created for women today, पढ़ ले लिख ले नहीं तो सारी उम्र किचन में निकल जाएगी, खाना बनाना पड़ेगा. हमने खाना बनाने को इतना एक गलत स्टेटस दे दिया कि जो घर में खाना बनाती है वो नालायक होती है, वो बिल्कुल अनपढ़ होती है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है. somebody who's taking care of the house is not good enough. and we got to know कि हाँ यार अगर मैं, और अब लड़कियां खाना बनाती नहीं, उनको लगता है ये तो बड़ा एक मीनियल सा काम है, ये तो नहीं करना है, बिकॉज खाना बनाना कोई काम होता है. That's so important. फुल हाउस की जो नरिशमेंट है वो उस बंदे के ऊपर डिपेंड करते हैं, who's going to cook. हमारी जो परवरिश आज की जो 30-40 ईयर ओल्ड वुमेन है ना, हम बड़े ही ऐसे हुए हैं, पढ़ ले नहीं तो रोटियां पकांदी रह जाएंगी, पढ़ ले नहीं तो सारी उम्र घर में निकल जाएगी. हमें लगा यार घर में रहना इज वेरी बैड, you need to do something. True. Never do that to your kids, because this is basic survival skill. पेट तो सबको लगा है ना, तो लड़का है या लड़की है, खाना बनाना तो आना चाहिए. That's true. अगर हम बात करें स्मॉल विन्स, अगर कोई भी स्मॉल अचीवमेंट आपके बच्चे ले रहे हैं तो वी शुड सेलिब्रेट एवरी स्मॉल विन, या हमें उनको चॉकलेट्स दे दी,
इट्स अ सेलिब्रेशन और इट्स अ ब्राइब कि और अच्छा करो और बेटर करो तो ये मिलेगा। सेलिब्रेशन, अपलॉड, एंड एक अपलॉड थेरेपी भी होती है। तो जितने बच्चों को डिप्रेशन होता है ना, हम उनको अपलॉड थेरेपी पे ही डालते हैं। और अपलॉड थेरेपी सिर्फ पेरेंट्स दे सकते हैं। बच्चा जितना वैलिडेशन अपने पेरेंट्स की मांगता है ना, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरी टीचर, मेरे फ्रेंड्स या वो क्या करें, पेरेंट्स, उनका वैलिडेशन बड़ा ज़रूरी है। हैवंट यू सीन व्हेन अ किड स्टार्ट्स टू क्रॉल, ओ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ओ चल गया चल गया चल गया, तो पहला स्टेप बच्चे ने लिया, हम उसको इतना अपलॉड करते हैं कि उसको लगता है अरे ये तो कुछ बहुत बढ़िया कर दिया मैंने, कर दिया। हाँ, ट्रू। एंड देन ही स्टार्ट्स वॉकिंग। कोई 10 महीने का बच्चा चलता है, कोई 11 महीने का चलता है, कोई 1.5 साल का चलता है, लेकिन आप जैसे जैसे बच्चे को जो जो बताते जाओगे वो उसका सच बनता जाता है। अरे ही इज सो इंटेलिजेंट, अरे ही इज सो गुड, अरे ये तो बड़ी गुस्से वाली है, तो उसको लगता है अच्छा मैं गुस्से वाली हूँ, ठीक है मैं गुस्से वाली ही हूँ। Whatever you're talking, whatever you're saying to this, raw mind, this blank slate, that becomes their reality. So when you're applauding the children for very small things, वो उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ बन जाती है। उनको लगता है अरे I have to do this, this is going to be so good, I have to do more about it. My friends, I wore a mini skirt, my friend said, oh my God, you look very sexy, and I'm going to wear them more often now. Oh, I'm wearing a sari, everybody says, oh, you look very sexy in a sari, I'm going to wear more saris now. I got a new haircut. वही आप जब एक छोटा बच्चा जब क्रॉल करना शुरू करता है, वहां से शुरू करते हो ना, अपलॉड थेरेपी हमें भी चाहिए होती है। Seriously, that's true. Okay, we have one game that is burn or bloom. So these are the props. Okay, yeah. अगर आपको बोलना है कि पेरेंट्स शुड अवॉइड दिस, तो यू विल से बर्न। अगर आपको लगता है कि पेरेंट्स को ये हैबिट ग्रो करनी चाहिए, देन इट विल बी ब्लूम। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। स्ट्रिक्ट रूल्स फॉर टीनेजर्स। Burn. Never ever have very strict rules for teenagers. You need to be very very flexible with them. उसी बात पे एक दिन डांट पड़ेगी, उसी बात पे दूसरे दिन उनको अपलॉड करना पड़ेगा. You cannot be black and white with children. Okay, friendly parenting versus authoritative parenting. I myself believe that it should be authoritative parenting, because the kids need to know who's the boss. Okay, You're not there to become their friend. You're there to guide them for their life. so it should. It's such a sad thing that we rear our children, we make our children grow, we love them the most to stay without us. हम अपने बच्चों को बड़ा करते हैं अपने बगैर रहने के लिए तैयार करते हैं उनको. We really treat them in a way कि तुम affluent हो जाओ, पर पेरेंट्स ऐसा चाहते नहीं हैं. They want children to be उनके ऊपर डिपेंडेंट. आप जितनी भी व्हाट यू कॉल कितनी बिजनेस क्लास फैमिलीज देख लो, उन घरों में, इवन इन माई बुक आई हैव मेंशन्ड दिस, कि आज भी कितनी पंजाब में, लाइक अगर मैं सिर्फ इतने एरिया की बात करूँ कि पंजाब या नॉर्थ इंडिया की बात करूँ, कितनी ऐसी बिजनेस फैमिलीज हैं जहाँ पे द बॉयज़ दे जॉइन देयर फादर्स बिजनेस, and the father is the one who's taking care of the bank and the property and the signature, the signing authorities with the father. उस घर की बहू की जो हालत होगी ना, that's merely like a maid. उसकी कोई अथॉरिटी नहीं होती है घर में, और वो चाहते, और वो बड़ी फ्लॉन्टली बोलते हैं हमारे बच्चे हमसे पूछे बगैर कोई डिसीजन नहीं होता, हमें पूछ के ही डिसीजन लिया जाता है. यू प्रिपेयरिंग अ मैन चाइल्ड, दे डोंट हैव देयर ओन अथॉरिटी. 40 साल का भी जो लड़का है वो अपनी मम्मी के पास जाएगा, ये ऐसे कर ले. हम किसी को इज्जत देनी और किसी के डिसीजंस पे चलना, दे आर टू वेरी डिफरेंट थिंग्स. So we should understand. Yes. Exactly. It's a very thin line between Very thin this. line. Comparing your child with other kids. A big time burnout. You cannot compare siblings also. How can you compare your child with somebody else's child? जब एक बड़ा बच्चा पैदा होता है, उसको अलग set of parents मिले हैं. जो second sibling है, he has a very different set of parents. The first parent was a first time parent. Now the second child's parent has already been a parent. Parenting style में भी बहुत फर्क आ जाता है. Okay. So you cannot compare same people, same children in the same house also. How can you compare somebody जिसका background कुछ different है, जिसके parents अलग background से आए हैं, उनके घर के हालात कुछ different है, financial status is different है. You cannot compare anybody. So एक घर में भी जब बहुत ज़्यादा comparing होती है ना, दो बच्चों में भी, वो
बच्चे कभी भी आपस में, they can never be good siblings also. There is always going to be rivalry and a constant competition between sisters also. So It's a big time no. It's a big, a big cross for parents to compare their children, not even outside, not even in your home. Okay. Rewarding kids with chocolates and gifts for every task. 50-50. Because you cannot, it's not that every time you do not give them anything. But yes, sometimes you can reward them with something. Yeah. Open conversations about filling. Big blue. Because you need to be very, very open about things. Children who have very open conversations in their house, they can talk about anything, like anything. They can talk about their sexualities, they can talk about their period problem, girls can talk about their body changes, men, boys, teenage boys can talk about their body changings to their mothers or their, their fathers. These kids do not want validation from friends or outsides, and they will never have peer pressure if they can talk about anything in the house. Like my daughters talk everything. Now, because her friends know that iske ghar mein koi bhi baat kar sakte hain, they also come to my house and talk about their feelings. And I'm like, I'm not a mother to these 10 more girls. But yes, you need to have a very open conversation with your children. That's true. Okay. Parents is always right. Wow. Mothers are not always right. They are not God. In my another podcast also I said, mothers are overrated. It's not that they can never be wrong. They're human. They can be wrong. They can feel sad. They can do wrong. They can do mistakes and it is all okay. Fathers can never be right कि हाँ वो हमेशा ही ठीक होंगे because they've given birth. No, they can be wrong. But अगर आप बहुत openly इस चीज़ को accept कर लेते हो अपने बच्चों के सामने तो उन्हें लगता है कि it's okay to do a mistake because children should learn from their mistakes. They can do n number of mistakes and they should do a lot of mistakes and learn from their mistakes. आप रूल बुक में बताओगे, आप मैथ्स किसी को सिखा दो, समझा दो, जब तक वो खुद प्रैक्टिस नहीं करेगा उसको नहीं आएगा. आप बच्चे को एक पोइट्री इंग्लिश की समझा दो, she'll listen to the teacher, but until unless she's going to read it again, she's going to revise it again, she will never understand it. Same goes, you tell the child, okay, you don't do this, until unless the child has done it, he's not going to understand that this was not to be done. We need to just make children understand you have to do your set of mistakes, not blunders. Mistake क्या होती है? जिसकी वापसी है. ब्लंडर जिसकी वापसी नहीं है. आप स्कूल बंक करके फ्रेंड्स के साथ मूवी जा रहे हो, माफ़ी है इसकी, सॉरी बोला तो माफ़ी मिल गई. टीनेज प्रेगनेंसी इज अ ब्लंडर. You need to tell children what is a blunder, what is a mistake. Let them do their set of mistakes. Teenagers need more freedom than rules. 50-50. 50. Yes. They need rules because they need to know that रूल बुक के साथ चलोगे तो ठोकर कम लगेगी. लेकिन अगर हम उनको सिर्फ फ्रीडम देते हैं, I told you, you cannot have a 3-time meal in one go. No. So there should be a balance. Yes, there should be a balance. Parenting is all about balancing. Marks decide a child's future. Big time burnout. Yeah. Because nobody can judge that marks will give you authenticity. Around 8 years back, I had a group of students of 35 children from BCM and from, I think, GNPS and GRD Academy. So they were all students. I used to teach English +2. And there was this girl from Satpal. And she came and, my God, this girl was a scholar in the sense कि मुझे जो बहुत marks लेने वाले बच्चे होते हैं ना, वो ज़्यादा पसंद नहीं होते. But she was intellectual also and intelligent also. She knew what is she saying. If she would write an essay, it took me a couple of times to really look into the essence of what she's written. She was that good. She was, pro types. When we had our exams and we had a bunch of GNPS girls and they scored somewhere around in the final exams, they scored somewhere around 99 out of 100 and 98 out of 100. They were very good with their studies and very good with their memory power. So they got good. The girl I'm talking about, one of my favorites till now, she got 94 out of 100 and she was feeling a little bad that, I could not get. And I still tell her,
still told her that day, darling, you're way better than them. It is just that one day the exam had to be done and तूने शायद एक आधी कुछ mistake कर दी होगी जिसकी वजह से तेरे को 99 नहीं और 94 आए. You make those both girls sit, the kind of ideas she has, the framing of the sentence that she does is way better than the girl who scored 99. It's just that one day you could not perform good doesn't make you bad or good. So it's not a validation. Not at all. And I've had, 5 cousins with me when we were about to give our plus 2 exams, 10th exams. And I've always been the black swan of the family, wherein, yes, all my cousins, I'm from Jammu, wherein padhai bahut important hai life mein. That one cousin would get somewhere around 98, 99 marks. मेरे वो आते थे 68, 78 marks. Okay. So I was never a topper. I was an average girl doing a lot of dances, doing a lot of debates and declamations, going out, representing my... और पढ़ाई नहीं होती थी मुझसे रट्टा नहीं बचता था, तो मुझे नंबर नहीं आते थे. And बहुत मेरी लाइफ बहुत उस लड़की ने झंड करी. उसने बहुत मुझे डांट पड़वाई है. आज वो लड़की एक टीचर है, आज मैं एक टीचर हूँ. शी डिड हर मास्टर्स, उसने एमटेक किया, उसने पीएचडी किया, वो एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है. मैं समहाउ प्रोफेसर्स को कई बार पढ़ा देती हूँ. So it's a big live example. Marks, trust me, marks do not encounter what are you going to become in life. Not at all. It's always about how good you're feeling about yourself. The unnecessary pressure parents को बिल्कुल नहीं देना चाहिए. It should be burned. पर बच्चे नहीं सुनते हैं. प्रेशर बच्चों को बाहर से बहुत मिलता है. Peer pressure, teachers, friends, parents. There's a lot of pressure from them. रिश्तेदार, a big time, black flag. Okay, comparing siblings for better performance. Big burnout. I don't want to even talk about it. Never ever do that to your child. आप किसी को थप्पड़ मार दो सड़क पे खड़े होके और किसी को कंपेयर करो, मुझे लगता है थप्पड़ मारने का ज़्यादा उसको दुख नहीं होगा जितना उसको कंपैरिजन का होगा. Punishment is the fastest way to teach discipline. Is that true? A big burnout. Not punishment. But yes, there are times then you need to spank your child. But punishments, no. You need to make the child understand. You have a 4-year-old or a 2-year-old toddler in your house and you tell them again and again not to put the finger in the socket, not to put the finger in the socket. But the child will put. वो आप मस्ती में करेगा. अच्छा देख रहे? My parents are looking at me. I'm going to do it. I'm going to do it. I'm going to do it. And there was a time I told my daughter, कर ले. She did that. She got a jerk. उसने दोबारा किया ही नहीं. So let them. हाँ, वही बात है ना कि ब्लंडर या मिस्टेक आप वहाँ पे उसको हाथ डालने दोगे ना जहाँ पे आपको पता है कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग सॉकेट नहीं है, बच जाएगा बच्चा. Parents should apologize when they are wrong. A big blow. Of course, they need to tell their children it's okay to say sorry. We as parents can also do mistakes and it is completely fine to say sorry. वो आपकी weak side नहीं देखेंगे, वो आपको as a human देखेंगे, which is more important. Practicing gratitude daily. A big time blue. Mothers can do that. Even fathers can do that. The best thing is chuck your child into the bed at night. And at that time, tell him to say, thank you, Babaji, you gave me this. Thank you, Babaji, for a good day. And you talk about it. So you get a very good 5 minutes talk with your child. Put a shabad or a part or a Hanuman Chalisa, सबके पास phone है आजकल. लगा दो एक छोटा सा. The child will, 1, memorize a scripture. 2, उसको नींद बहुत अच्छी आएगी. माँ ललाबाई सुनाती थी, लोरियाँ सुनाती थी. So पाठ बच्चा आज नहीं सुनता है. Why not this way? तो जब वो सोता है उसके पास लेटो. At least 10-12 years तक तो ये करो. Spending weekends as family time, not gadget time. Big time rule. We also have it in our house that we have 1 full day wherein we all detox. लोग व्रत रखते, everybody does fast. Hindu fraternity में तो बहुत ज़्यादा fast को मान्यता दी जाती है. Trust me, take a detox from your gadgets. We do that once a week. We do that. We put
all our phones on the dining table and we sleep in our rooms. We've had a bad episode with that also कि हमारे साथ गड़बड़ हो गई थी. There was a very big problem in my father-in-law's factory and all the phones were out and there was nobody to catch out कि क्या problem हुई थी. But otherwise yes, बच्चों के पास बैठना है बगैर टीवी के बगैर उसके पहले 1-2 हफ्ते में तो पता भी नहीं लगेगा कि बात क्या करनी है. Trust me, and then slowly the child will talk. Appreciating effort, not just results. Big time. At least they have. Yes. क्योंकि रिजल्ट क्या होगा, कई बार आप बहुत मेहनत करते हो, by the time you're going to give your exam, you just had an accident. You could not give the exam. What You had to give that, the class has to be repeated again and everything. Yes. You're very good with the game. It was such a seriously, it was a good game. Now let's come back to the questions. जो screen time है, Instagram पे reels देखना या कोई भी anything kids are doing, आपको लगता है कि उनको रोकना is a solution या parents को right guidance देना is a solution rather than every time just saying कि अपने phone side पे रख दो, don't do this, तुम्हारा watch time ज़्यादा हो गया. We should stop them or we should guide them कि ना better way वो कैसे उसको utilize कर सकते हैं अपने gadgets को rather than every time you are playing games या तो you're just scrolling reels. तो किस तरह से हमें इस चीज़ को लेना चाहिए? By the time child grows up and goes to the mainstream school, the time has to be limited. The problem occurs, mothers and fathers both are working. There's nobody to tell the child, don't do it. So we say that we have to stop the screen time, but give them an alternative. आप सिर्फ ये बोल के नहीं छूट सकते हो फोन नीचे रखो. No. You have to tell them फोन नीचे रखो और ये करो. So either mend your almirah, tidy it up, make your bed, pick your shoes and put them into somewhere, or help me in the kitchen. Give them some task when you're telling them to stop using their phone and make sure that you yourself are not using it at the same time, even if it is for work. Okay. आपके एक्सपीरियंस से एक सिंपल साइन जो हम पेरेंट्स इग्नोर कर देते हैं जब हमारा चाइल्ड को इमोशनल इम्बैलेंस से जा रहा होता है बट वो इग्नोर दैट, तो ऐसे सिंपल साइंस क्या हैं जो एज अ बीइंग अ पेरेंट हमें नोटिस करने चाहिए? व्हाट कैन बी दैट? सिंपल है. All this screen addiction gives you dopamine, which is exactly like cocaine or drugs. वो आपको हाई कर देते हैं. ये आपको वैलिडेशन में हाई कर रहा है. आप थोड़ा सा एक देखते हो, 2 मिनट का कुछ देखते हो and you start laughing, then आगे and आगे. ये जो एक सस्ता नशा मैं इसको बोलती हूँ फोन हमारे सस्ते नशे हैं. ये सस्ते नशे हमको बहुत महंगे पड़ेंगे आगे जाके, because one, concentration of the kids has become very poor. And to elevate this concentration, we need to see कि बच्चे को जब हम कुछ क्वेश्चन बोलते हैं, मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस देते हैं, तो क्या बच्चा उसको फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है. इफ द चाइल्ड इज एबल टू अंडरस्टैंड, अच्छा ऐसे कर, बैग उठा और अपने रूम में लेके जाओ और वहां से ना फलानी चीज मुझे उठा के दे दे. हैं क्या बोला? क्या क्या करना है? दैट मीन्स सिंपल instructions, 2-3 instructions a child is not able to understand. This is a very big red flag that okay, now you have to look at the child and see to him कि कुछ तो गड़बड़ चल रही है, because छोटे बच्चे multiple instructions बहुत जल्दी सुनते हैं क्योंकि वो आपको गलत साबित करने के लिए बहुत ज़्यादा उतारू होते हैं. आपने ऐसे बोला था, मैंने तो ऐसे किया है. So if the child is not listening to you, that means या तो screen time ज़्यादा है या friends के साथ कुछ ऊट-पटांग हो रहा है, that the child is not telling you. In today's competitive world, every child is stressed. तो पेरेंट्स को कब उनको पुश करना है या कब उनको सपोर्ट करना है? How they come to know? When we talk about children and their support system, parents have to be there. As simple as that. बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, माँ का या फादर का वहाँ होना ज़रूरी है. पहले क्या होती थी? जॉइंट फैमिलीज़. तो जॉइंट फैमिलीज़ में बच्चे के पास मम्मी नहीं है तो पापा है, पापा नहीं है तो ताई है, ताई नहीं है तो दादी है, दादी नहीं है तो दादू है या बुआ है या चाचू है. अब है न्यूक्लियर फैमिलीज़ फॉर एनी रीज़न.
सास के साथ नहीं बनती है, या घर में हमारा वर्क कल्चर ऐसा है कि वो बहुत पिछड़े हुए हैं, या हमारा और उनका बहुत जनरेशनल गैप है, पर आगे का जो बच्चा है उसका नुकसान हो रहा है। तो ये तो दिस इज समथिंग दैट द चाइल्ड नीड्स टू नो, दैट इफ आई हैव अ प्रॉब्लम देयर इज समबडी आई कैन कन्फाइड इनटू. दैट confidentiality, that availability of the parent is missing. That is what we need to create. That is why I'll tell you, there are a lot of examples I've had. A very close cousin of ours, she was working in Bangalore as a vice president for HDFC Bank. She's 45 plus. She left the job. अच्छी salary है, अच्छे perks है. क्यों? My daughter has started, her daughter just completed her 10th. My daughter has just told me, you don't have time for me. कहती मैं सुबह 8 बजे निकलती हूँ, मैं रात को 8 बजे आती हूँ. I'm dead tired. देखो, when you go and work, वो वेले बैठ के तो तुमको सैलरी देने से रहे. They give you salary, वो निचोड़ लेते हैं बंदे को जब वो काम कराते हैं. She's dead tired when she comes back home. She says, what am I living for? I go at 8, I come back at 8. It's Bangalore. The rush is too much. It takes 1 hour, 1.5 hours to reach your office, same time to come back. She says, when I come back, my children are half dozed off. I have literally not lived my child's, and here also in Ludhiana, abhi recently I heard, here only, in this area only, this woman said that I have no time for my children. She's also working in a bank, and she says, my next promotion is very good, like I'm going to be the VP of the company. But I cannot do it anymore. I cannot do it anymore because I'm having all sorts of hot flushes these days. There's so much of work to be done. There's so much to be, catered to. And my children are missing out. There are certain things that the mother has to see. And because of this work culture, bachcha suffer kar raha hai. Either we should balance it, yes. या mothers या फादर किसी एक की प्रेजेंस. और ये जो गिल्ट है ना, ये रहता भी सिर्फ मदर को है कि मैं अपने बच्चे के लिए अवेलेबल नहीं थी. As compared to a father, this guilt will always kill and crunch a mother more. True. Okay, there is one another game that is rapid fire. Okay, आपको one line में answer देना है. I will give you a small word and one liner answer. Okay, first one is failure. Failure for me is when you lose your support system. It's not that you are falling sick. It's not when you are not having any money. It's not about when you do not have a house over your head. Failure is when you do not have people around you to ask you, are you good? Are you better? When you're all alone, that's failure. That's exactly when you failed in your life. Restart. Restart for me is revolt. Either you have to revolt against your comfort zone, either you have to, revolt against the norms that you were living in. घर से लड़ाई करके या तो निकलोगे या फिर अपना comfort zone करके निकलोगे. तो restart is always a revolt. Confidence. Confidence for me is feeling comfortable in your own skin. There's just 5 lines I'll be speaking. When you're 13, when a girl is 13 and she looks at herself into the mirror and she says, I want thinner thighs and less hair on my body. When she's 26, she wants to look like a 21-year-old again. Mm-hmm. When the girl is 30 and she looks at herself into the mirror and she says, I want to be 26 again. When the girl is 40 and she looks at herself into the mirror and she says, I want that energy back. When the woman is 50, she looks at herself into the mirror and she says, I just want this knee pain to go away. Mm-hmm. And when she's 80 and she looks at herself into the mirror, and this is the woman you've disliked all your life for some flaw or the other. Confidence is comfortable in your own skin. You're flabby. I don't know why people want to look the same these days. Everybody wants puffy cheeks. Everybody wants jawlines. Why do you want to look like mannequins? Yeah, dekho, I've seen my mother entertaining people in the house once a week or twice a week. And we used to have parties and there used to be petite women and fat women, and we would have tall and short and somebody with shorter hair, somebody with longer hair, somebody with nails and somebody without nails and somebody with very good lashes. We would sit, we would talk about art, culture, people, gossip. We would do everything.
There would be guests जो किसी की बात सुन के गुस्सा होकर निकल जाते थे and फिर हम उनको मनाते थे. वो सब खत्म ही हो गया. Everybody wants to look the same. Same cuisines, हर चीज सेम करनी है तुमने. अपनी इंडिविजुअलिटी ही नहीं है. खत्म. Okay. Parenting. Hit and trial. Parenting is all about hit and trial. The first time parents, it's about hit and trial. The second time parents, it's about a little experience from the last child that you can do better with this one. Yeah. But your children will always find flaws in you. Be prepared. Womanhood. The most beautiful thing I think I've ever experienced in my life. Womanhood. I get a chance to get reborn again. I want to be a woman. It's not that it's been easy. It's never for anybody. True. You're very good at games. एक एक्टिविटी जो फैमिली को इकट्ठे करना चाहिए एवरी नाउ एंड देन ताकि वो स्क्रीन से सब कोई हट सके. What kind of activity it can be? One thing that you do with your children, put them to bed. The father can accompany. Marvelous. Tuck your children into bed. Talk to them about the day. That's one thing that you do for a child that is somewhere in the age of 2 to 12. After that, check on your children. Always now and then. And then, once in a day, sit with them. अच्छा आज क्या हुआ? क्या किया? कैसे किया? उसने क्या बोला? Without judgment. True. Without any ऐसे क्यों किया? ऐसे क्यों नहीं बोला? नहीं. Just listen. कोई ऐसा मंत्रा for the parents when they're talking to या they're dealing with their teenagers क्या होना चाहिए? Don't talk. The only mantra for teenager kids parents is don't talk. Listen. I think I've been talking about it for so long. Only and only listen to what your child. He has so much to talk about. You know, I had an institute wherein it's a school of languages and counselings. We do counselings for children and we do career counselings. We do a lot of languages also. We do French, we do Spanish, we do English. But I tell you, every time I used to take up around 5 years back, I was taking up +2 English classes also for almost 200 students every year. And trust me, it used to be 2 o'clock in my clock. मैं उस time पे नहीं रखती थी class. 2 बजे से लेके 4 बजे तक it is my kids. I would go. It used to be so much toll on my body because I had to get up from my office at 2. 2:30 is going to be my child's, off. The school is going to off. I would go pick up my girls in the car. My God, they are chatterboxes. Mama ye hua, mama ye hua, mama ye hua, mama ye hua. And I would know everything that has happened. The first person they're going to encounter, they're going to blub out. They're going to vomit out whatever has happened in their day. And they would, वो मैम ने ऐसे बोला, मेरी फ्रेंड को किसी ने गर्ल वो लव लेटर दिया, तुम्हें पता है आज क्लास में ऐसे हुआ, वो जो सर था ना, my God, he's pathetic. They just want to talk. Be there. So I know almost everything what my girls are going through. So I would bring them home. I would give them food. I would sit with them. That made me make them eat kiya, tori, tinde, kaddu, everything. They would eat every single thing in the house because I'm listening. It's not about food. It's like how interesting and interactive that session is. And I would give them a glass of lassi and I would give them food and I would sit with them. By 4, I would tell them, ab cartoon laga lo, main ja rahi hu. By 4:30, I have another class. I'm going and by 6:30, I would come back home again after 2 hours. And then I would tell them, ab kitabein kholo. I think वो मेरी लाइफ का सबसे, अब तो they've grown up, they're into colleges and everything, but वो मेरी लाइफ का सबसे अच्छा period था, wherein those 2 hours, there's a lot of bickering, they would talk. Do that with your children. Girls, so they are very expressive, but boys, they are not. So it's very, different with the boys. I have a toddler, so no idea what he's going to do. But trust me, by the time जब तक बच्चा 10 साल का है ना, you are their superheroes. Okay. It's always going to be mama, papa, mama, papa. But after that, tum bevkoof ho. The most stupid being on the earth. My teacher knows better than you and my friends definitely know better than you. You are the most stupid person around. ऐसा कौन सा parenting style है जो सबसे ज़्यादा impactful है for the teens? Give them choices. Ask them. Trust their instinct.
You know यहाँ पे ये गिरेगा, पर जाने दो. Give them a chance to do their set of mistake. करने दो. मोस्टली पेरेंट्स चाहते हैं कि दे वांट टू बी फ्रेंड विद देयर किड्स. तो एक बहुत ही फाइन लाइन है बिटवीन डिसिप्लिन एंड फ्रेंड्स. तो हाउ दे कैन डिसाइड इट? कब Discipline is very important, but do not be a helicopter parent. Always hovering upon the child. What is happening? Who said that? Who called you? Who did this? No, do not hover upon your child. Be there, but do not overindulge when the child is a teenager. He will tell you eventually what he wants to tell you. जैसे आजकल बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है किड्स में अल्कोहल का. वी हैव अ फेयर लाइक टीनेजर्स का कि हाँ ही इज़ इनटू टीन्स. तो पता नहीं कब फ्रेंड्स के साथ ये बाहर गए एंड दे स्टार्ट हैविंग बियर. तो हम उस चीज़ के लिए कैसे बच्चों को प्रिपेयर कर सकते हैं दैट इट्स टू अर्ली टू डू दिस? मतलब हाउ वी कैन काउंसिल देम? Talk to them. जिन घरों में अल्कोहल चलता है वो बच्चे पक्का अल्कोहल उठाएंगे ही उठाएंगे. बी ओपन टू इट. जिन घरों में फादर या मदर या दोनों अल्कोहल लेते हैं, बी ओपन टू इट. द मोमेंट यू टर्न 18, यू ड्रिंक योर फर्स्ट ड्रिंक विद मी. आप उसको चॉइस दो कि आप मेरे साथ ही पहली ड्रिंक, तेरी पहली ड्रिंक मेरे साथ होनी चाहिए. उसको लगेगा ये बहुत बड़ी बात नहीं है, मेरे घर में हम लोग कर सकते हैं. वो बाहर जाके नहीं एक्सपेरिमेंट करेगा बच्चा. सेकंड, जिनके घरों में नहीं चलता है, you need to talk about them, about your own rules and regulations, why you do not drink. So it's always about the kind of character building that you do as a child. वो रह जाता है. You tell somebody from a Hindu faith that you cut your hair, because cutting hair is normal. They will. You tell a Sardarji who has a full beard and a pagdi and everything that you cut your beard. It's going to be a jerk and a jilt towards the person कि यार ऐसे कैसे. ये नहीं कह रही हूँ कि बच्चे नहीं करते हैं, बट एक एज तक यू हैव टू टेल द चाइल्ड, यू हैव टू टीच अ चाइल्ड. आफ्टर दैट इट्स देयर ओन डिसीजन, दे विल टेक इट. उनको ठीक लगेगा, आपकी समझाई हुई चीज़ उनको समझ में आ गई तो वो रख लेंगे, नहीं आएगी काटेंगे. एंड जो आजकल बच्चे नेगेटिविटी को बहुत जल्दी दे अट्रैक्ट, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं लाइक नेगेटिविटी से ज़्यादा नेगेटिव चीज़ों से एज कम्पेयर टू द पॉजिटिव वन. तो ये जो डिफरेंस है कि this is not right for me or this is right for me, ये हम कैसे पेरेंट्स बीइंग अ पेरेंट उनको काउंसिल कर सकते हैं टू डिसाइड इट स्पॉन्टेनियसली कि आपको कब किस डायरेक्शन में जाना है कि वो नेगेटिविटी से इतना इन्फ्लुएंस ना हो सके. मुझे ऐसा लगता है कि आजकल के बच्चों को इन्फ्लुएंस करना इट्स वेरी इजी समटाइम्स. The children, I said, the children really learn a lot from their own homes. If the parents are being more negative about things, even the mothers, the fathers, they see them bitching around. ओ फलानी आई थी, उसने ऐसे बोला, वो है ही ऐसी. When they're seeing their parents doing it, they become negative. They attract more negativity. In their houses, when you see that the children are seeing their mothers, उसने ऐसे बोल दिया, कोई बात नहीं, बोल दिया तो बोल दिया, क्या हो गया, कुछ नहीं होता है. When you learn all this from your home only, the kind of upbringing you will have in your house, that's exactly the kind of person you will feel. Schools do teach you, but the first school is your own home, your own parents, your own dada dadi. There are times that the children learn from their parents, and there are times that parents are very good gurus wherein they know ऐसे तो बिल्कुल नहीं बनना है. When a boy has seen a mother being tortured by the father, that my father has been very abusive towards my mother, or my father has been very dominating, he says, I've seen my mother suffer. ऐसे तो बिल्कुल नहीं बनना है. And he becomes more softer towards his wife. True. So when you have to teach, be an example. It's as simple as that. You want to teach your child patience, practice patience in front of a child. उसने गिरा दिया पानी, नहीं चिल्लाने की ज़रूरत है. That's exactly how the child will learn. Whatever you're doing in the house, they're learning exactly the same. पुराने ज़माने में लोग बोलते थे शादी करनी है जब किसी लड़की की, तो लोग उसकी माँ को देख के लड़की से शादी कर लेते थे. माँ को मिलते थे, माँ का हाव भाव देखते थे और कहते थे इसकी बेटी है तो ऐसे ही बन जाएगी. And they would get, the mother's impact was so strong that a girl would get married only when the society would look at the mother. अरे यार ये इसके बच्चे हैं तो कर दो शादी. इतना impact होता है parents का. तो आज की डेट में भी it's the same. It's the same. If you're seeing your mother taking care of herself, she's present in the house, the boys are going to be like that. If you see a very beautiful relationship of father and a mother, they would like to get married.
and if you see them not at all in that good relationship, तो इसीलिए तो आजकल कितने पेरेंट्स हैं, कितने बच्चे हैं जो कहते हैं शादी करनी ही नहीं है, we don't want to get married because they've not seen a very good relationship in the house. So negativity comes from the house, positivity comes from the house, and if you have a good mentor in school, if you have a very good teacher in the school whom the child idolizes. Okay, we really like the conversation. हमारे शो का एक लास्ट क्वेश्चन है, that is unapologetically Aman Bhatia is. Aman Bhatia is bindas. I have always, I told you I'm the black swan of the family. I am the most badtameez bachcha in the family. I talk my mind. I talk whatever. I do not disrespect elders, but I talk my mind. Very simple example. My husband does not like mutter. Okay. And whenever I'm putting mutter in a pulao or a sabzi, there used to be this bombarding on the dining table coming. वो खाता नहीं है तो तू डालती क्यों है? 1, 2, 3, 10 times this was spoken to me. And then this unapologetically Aman Bhatia came up and it's like, मुझे पसंद हैं, इसलिए डालती हूँ. I like them. I want to eat them. That was the last time anybody said, why do you put mutter in a sabzi? Because I am also as important as everybody in the family. I believe that. I practice that. I am important. People would say, oh, this is an attitude which many people do not like. I said, be prepared. I'm preparing 2 more. I have 2 girls. 2 more Aman Bhatias would be. Even I think they'll be better than me. I'm preparing 2 more girls like that, who will be exactly like me, unapologetic about what you want in life. That's true. It should be. That's We should exact- prioritize ourselves. We should prioritize ourselves. And one more thing that I do not do is, मुझे dark circles कभी नहीं आएंगे. Why? Because anything, any damn thing that has happened in the house or at my workplace or with a client, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा एक आध दिन ही उसका कुछ प्रॉब्लम रहता है, उसके बाद मुझे होता है छोड़ दो. Somebody gave me a very good guru mantra. He said, when you are in a situation that is troubling you, I think that's going to be helpful for everybody out there also. If something is troubling you, think about it in next 5 years, is it going to be relevant? If not, do not spend another 5 minutes on it. True. It's not going to bother you again. Lovely talking to you. बहुत motivational Thank and you. inspiring था, seriously. Aman, we have this small token of love for you. Thank you so much. Thanks for coming to our show. We really have a good conversation. I hope you enjoyed that. I did, and I hope it was good for you also to talk. Seriously, I love that. Thank you. Okay, signing off, unapologetically, शिखा कपूर बहल. आज अमन जी ने हमें याद दिलाया कि पेरेंटिंग का मतलब सिर्फ रूल्स बनाना नहीं, बल्कि रिश्ते बनाना है. बच्चे हमेशा वही सीखते हैं जो हम जीते हैं. तो चलिए उनके लिए सिर्फ टीचर्स नहीं, रोल मॉडल्स बने. स्क्रीन्स को हम रोक नहीं सकते, लेकिन वैल्यूज़ को रूट कर सकते हैं. और जैसे अमन जी कहती हैं, जब पेरेंट्स कनेक्ट करते हैं तभी बच्चे ब्लूम करते हैं.